Hello class 7. I am teaching you fourth chapter of the biology, that is respiration. Today I will tell you about the respiration in leaves. Okay, so respiration in leaves, how respiration takes place in the leaves. Now let's start. The leaves of a plant have tiny pores called the stomata. तो जो प्लांट की लीव्स है उसमें टिनी पोर्स, टिनी मीन्स स्मॉल, पोर्स में holes. Okay, so small holes like structures are known as a pores. Okay, so small pores are present and these small pores are known as a stomata. Okay, so every leaf or every leaf is having a tiny pores called stomata as well as intercellular space. So what is intercellular space? The space which is present in between the cells of the leaves. Okay, तो जो लीव की सेल्स हैं, लीव की सेल, रिमेंबर माय वर्ड्स, जो लीव्स की सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होती है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज अ इंटरसेलुलर space. Okay, so every leaf is having a tiny pores called stomata and intercellular space as well. Now the exchange of respiratory gases, I had told you oxygen and carbon dioxide are considered as a respiratory gases. Okay, takes place by the process of diffusion through the stomata. तो जो रेस्पिरेशन है, जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है लीव्स में, वो क्या, उसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी goes inside the leaves by the stomata with the process known as a diffusion. And I had told you about the diffusion. What the diffusion is? Diffusion is the movement of the molecules from the higher concentration to the lower concentration. Okay, so exchange of respiratory gases in the leaves takes place by the process of diffusion through the स्टोमेटा. तो स्टोमेटा के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है लीव के अंदर विद द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. ओके, नाउ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. ओके, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, तो एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, तो क्या होगा, ज़्यादा से कम की ओर जाएगा, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस मीन्स अंदर जाएगी इनटू अ लीफ थ्रू द स्टोमेटा. तो ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू लीफ के अंदर जाएगी एंड रीचेस टू द ऑल सेल्स वेयर इट इज़ यूज्ड इन द रेस्पिरेशन. और पूरी सेल्स में पहुंच जाएगी जहां पर भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होनी है. सो वेयर एवर द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द leaves, oxygen goes inside the leaf through the stomata. Now the carbon dioxide produced during the respiration, so we all know that ki respiration produces the carbon dioxide and this carbon dioxide diffuses out, means coming out from the leaf into the air थ्रू द सेम स्टोमेटा. तो जिस स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाएगी, सेम उसी स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी. नाउ दस द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम. सो ऑल वी नो दैट कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड अप एंड ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट. तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज होता है और कार्बन ऑक्सीजन गैस इज गिवन आउट इन द फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल convert into the glucose C6H12O6 and oxygen gas is released. So same thing is written over here. During this process carbon dioxide is used, this carbon dioxide is used and oxygen is given out, this oxygen is given out. I believe you understood this much. Now let's move forward. A part of oxygen given out as a result of photosynthesis. So फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अभी हमने क्या देखा, ऑक्सीजन गैस वाज
releasing in the atmosphere. So the part of the oxygen which is given out in the atmosphere by the photosynthesis, which is used up by the plants for the respiration. तो जो ऑक्सीजन गैस निकल रही थी, that oxygen gas is used by the plant for the respiration. Now I'll tell you how. Okay, I have shown you the process of the photosynthesis. Carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll, it converted into the glucose and oxygen. Now what happens in the respiration? This glucose C6H12O6 in the presence of the oxygen, that oxidation of the glucose takes place, and this glucose is converted into the carbon dioxide, water and energy. Okay, so this happens in the respiration. There is a oxidation of the glucose. When glucose is combined with the oxygen, it gets converted into the carbon dioxide, CO2, water, H2O, and energy is released. Okay, this energy is released. So this is a complete equation of the respiration. Now, so a part of oxygen given out as a result of the photosynthesis. So जो भी photosynthesis में हमें oxygen मिल रही थी, that oxygen is used in the oxidation of the glucose and for the respiration, and rest is given out through the stomata. Okay, so the part of oxygen given out as a result of the photosynthesis is used up by the plants for the respiration, and rest is given out through the stomata. और जो अभी हमने क्या देखा, जो अभी ऑक्सीजन गैस बाहर आ रही थी, that is coming out in the atmosphere by the stomata. Okay, now carbon dioxide given out by the respiration. So when respiration takes place, this carbon dioxide is given out. Okay, so when carbon dioxide is given out in the atmosphere, and this carbon dioxide is used in the plant for the photosynthesis. So the carbon dioxide which is released in the respiration, that carbon dioxide is used for the photosynthesis process. I believe you understood this. Okay, now so carbon dioxide given out by the respiration is used up by the plant for the photosynthesis, and in this way the cycle continues. So ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल इसी तरीके से एटमॉस्फेयर में चलती रहती है. ओके, सो नाउ आई विल टेल यू इन हिंदी कि व्हाट हैपेंस इन फोटोसिंथेसिस में. क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर gets converted into the glucose in the presence of sunlight and chlorophyll, and oxygen gas is released. This oxygen is used. अब इस ऑक्सीजन का यूज होता है हमारे, this oxygen is used in the oxidation of the glucose and carbon dioxide is released. This carbon dioxide is again used in the process of the photosynthesis. Here you can see this carbon dioxide is again used in the photosynthesis. So by this oxygen and carbon dioxide cycle is continuous. Okay, so I believe this much you have understood. I will come with the new topic in my next video. Till then, prepare it. Thank you.